ओम सभी को सादर नमस्ते। आज के सत्र में सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले हम अपनी ध्यान को एकाग्रचित करें। सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। 2-3 बार ऐसे करने के बाद फिर लंबे सांस लेकर के सांस छोड़ते समय 3 बार परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम के माध्यम से जाप करेंगे। फिर गायत्री मंत्र पाठ। ओम जाप और गायत्री मंत्र पाठ के समय हमारे ध्यान जो है अपने उच्चारण पे लगाने के लिए प्रयास करें। हमारे धारणा जो है अपने मंत्र उच्चारण ओम का उच्चारण ही पे रहना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। दोनों हथेलियों को मिला करके घर्षण करेंगे। आंखें को ढक करके धीरे धीरे हथेलियों के नीचे खोलेंगे। आज का पहले से मैं सूचना कर दिया था। एक विषय मैंने दिया था, गिव वन टॉपिक, व्हाई द नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ। आपको 2-3 मिनट दिया जाता है। यू जस्ट हैव टू express yourself on that topic and we can progress the discussions on that one in the same time. हमारे जीवन में अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की क्यों जरूरत है? Why do we need spirituality in life? So if you need to express yourself, please just open your camera and then unmute yourself and you can put the questions or express your views on that. नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैंने ऐसे थोड़ा सा ही निष्कर्ष निकाला है। मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए प्रतिदिन के जीवन में आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है। Okay. यदि योग दर्शन के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है तो स्वस्थ शरीर से ही धर्म पथ यानी अध्यात्म के पथ पर चला जा सकता है। मन मस्तिष्क को शांत करने के लिए। Anything else? That is one point. Namaste to everyone. हाँ जी, नमस्ते। This is a very good topic. Spirituality and religion, like you said, there are some overlapping things between the two. But if I have to choose something
maybe spirituality is first and then comes maybe religion. Most of us spend our life between me and I, and everything we do is I and me. Instead of ours, even we say it's my life. It's not my life, it's our life. It's the life of whatever I do affects me and also affects everyone else also. The different type of spiritualities which I have found is from research is mystical, then authorization, then intellectual, service, and social. So all these are not bound by time. And there is no place to perform all this like in place of religion. You have to go to a temple or a mosque or a church to pray, or you go there and there is a group there, so you can do spirituality alone at any time, at any place. Whatever quality and quantity you want to do, you can do. Everything you do is for the good of myself and for others. I can do a donation, I can do shamdan, I can do knowledge dan, I can do material dan, but materialistic word is out of spirituality. Somewhere I read that money should not be a factor when doing spirituality. It's like a guptan where there should be no expectations of return in whatever you are doing. That will improve my quality of life and the quality of life of others. It's a very, very vast topic, but I think a lot can be said on this and discussed on each and every aspect of this particular topic. Anybody else would add anything to that? Let me come with one question. Well, isn't it? What is your understanding of spirituality itself, the word, adhyatma? Because this is the first step the first word we need to understand. Then we can understand the others which you have discussed. Spirituality is fundamentals of spirituality, or what is spirituality itself? Like the word spirituality, I think it was divided into spirit and actuality, and it's the spirit of the life, the spirit of my life and the spirit of others. And adhyatmic, if you say in Hindi, it's more about study and knowledge. And I have to have knowledge myself to give knowledge to other people. So I can do that by doing a yoga, a prayer, a donation, anything which can improve the quality of my life and the life of others. It can be to a human being, non-human being, like even nature, trees, non-speaking species like animals. Do something which can overall improve the functioning of this world without any returns. That's very important. There should be no expectation of returns. Okay, anybody else on that? What is your understanding of the word spirituality, adhyatma? नमस्ते जी। एग्जैक्ट मीनिंग तो आप ही बताएंगे, लेकिन व्हाट आई फील
spirituality is like a support system. नहीं तो हम जिंदगी में अगर हमें इस चीज की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होगी तो हम आई थिंक मटेरियल चीजों में इतना उलझ जाएंगे और उसका कोई एंड नहीं है और उसमें हमें ये नहीं समझ आता है अगर हम उसी में रहेंगे कि हाउ टू कोप विद एनीथिंग। जब हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं तो वो हमें रास्ता अपने पे वर्क करना थोड़ा सा सिखाता है कि वर्क ऑन योर सेल्फ। बाहर क्या हो रहा है, बाहर की जिंदगी में या लोगों के साथ क्या हो रहा है उसमें हम उलझ ना जाएं। मुझे ये समझ आई है कि उससे you can cope with that nicely and with your actions. अपने एक्शन से जो दूसरों के ऊपर भी जो even though the other person don't have the knowledge but at least it can affect and you can make your surroundings उसमें अच्छी you can make the surroundings better in the sense peaceful. So I think the end of the day, we do need that path where we can sit with somebody where we feel very comfortable, and that is with yourself. And हम लोग जो दुनिया के उसमें उलझे हुए थे उससे निकलकर अगर ये हमें नॉलेज नहीं होगी तो वो नहीं हो पाएगा. And I think then we will be totally lost. But sorry, don't know exact meaning. अगर आप कहते हैं तो ये तो मैंने डिटेल्स में कर दिया. आप बताएंगे एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे शायद लगता है और भी अच्छे से हमें समझ आएगा. धन्यवाद जी. ओके. हम जब ओम और 3 बार शांति बोलते हैं उसमें प्रार्थना ये है, ज्यादातर लोग तो बोलते हैं कि ये तीनों लोकों में शांति हो. दैट इज नॉट द रीजन. रीजन इज, हे ईश्वर मुझे 3 तरह के दुख से बचा करके मुझे शांति दे. और ये 3 तरह के दुख जो है आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक. आध्यात्मिक, for which myself I am the reason, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो. So the word there is adhyatma, that originates from me. Then adibhautik, दूसरे प्राणियों के माध्यम से मुझे जो दुख होता है. आधिदैविक, जो दैवीय शक्तियां जो है, the forces of nature like calamities, सुनामी आ गया, अतिवृष्टि आ गई, अनावृष्टि आ गई, कुछ भी तूफान वगैरह, स्नो स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म, रेन स्टॉर्म, ये सब. So our focus today would be on आध्यात्मिक. आध्यात्मिक दुख को जानना है, फिर अध्यात्म के मार्ग पे हम प्रगति कर सकते हैं. So that concerns the self and that work needs to be done by ourselves. मंदिर में जाना या कहीं पे जाना या किसके साथ हम बैठ रहे, that is only a step stone. आप लोगों ने सही कहा कि we have to work on ourselves. अब जानना चाहिए दुख के कारण और दुख से कैसे बचे, तब हम सुखी रहेंगे. सुख is not that सुख of looking for material aspects in life, क्योंकि जो दुख आएगा उसे बचना चाहिए. Natural calamities you can't avoid, so you better accept them and you protect yourself against them. They say if it's announced that there will be a cold snowstorm, you have to protect yourself by wearing
warm clothes and be in shelter, windstorm, rainstorm. Keep yourself safe. आदि भौतिक, इसमें कुछ कुछ मात्रा में हम बच सकते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कुत्ता ने काट लिया या सांप ने काट लिया, that is unforeseen, then we have to rush and get the treatment to mitigate the suffering. दूसरा ने एक थप्पड़ मारा, if we reply we are going to create a war, so it's better. कोई बात नहीं, ईश्वर न्याय करेगा. But as far as possible, don't tolerate wrongdoings. व्यक्ति को समझाना है, समझाना है that you are wrong. But जैसे कहते हैं यथा योग्य, व्यक्ति समझने वाला है तो उसको समझा सकते हैं, ना समझ को कितने करेंगे वो तो समझेगा नहीं. Then आध्यात्मिक, look at the sources of pains and sufferings. इसलिए योग दर्शन जो अनिल जी ने मेंशन किया था उसमें कहा गया हे हेतु हान उपाय. Know the causes and then you can look for the solution. Then I take the word in English, spirituality. General definition, spirit of life, but I would say being spiritual in life. It's the spiritual reality in life. And spiritual reality, spiritual part of it overlaps with religion, but most of it has nothing to do with ritual. It's the way we live, not the way we pray, whether we live a life which is ethical or we live on bad principles. That is our choice. And this is what builds up the spiritual strength within us if we are on the right path of life. And if we take Yoga Darshan, the first two steps, Yama and Niyama. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. Non-violence, Ahimsa. Non-stealing, Asteya. Brahmacharya, self-control, including Swadhyay, sitting down every day, 10, 15 minutes, 20 minutes minimum to study the scriptures and allied texts. Brahmacharya. Aparigraha, non-hoarding beyond what is needed for a reasonable, decent life. Then Satya, which is very important. This Satya is the second, I brought it on the fifth there. Satya क्या होता है? जिस चीज को मैंने जाना वैसे ही मानना, वैसे ही कहना और लिखना है तो वैसे ही लिखना है. And if we know half of the truth, better not speculate on the other half, because if we are wrong, we'll go wrong on the whole of it. Say that we know only half of it. Don't say and speculate, because that half can be wrong. And for that, we need Shuddha Dhyan, the true knowledge. And that's why we pray in Mahamantra, Gayatri Mantra, Dhyoyo Naha Prachodayat, for the enlightened mind to be able to make that distinction between truth and untruth. Then Sauch, Santosh, Tapa, Swadhyay, Ishwar Pranidhan. Sauch, purity of mind, body, and spirit. Santosh, be content. Tapa, endure some degree of heat and cold, thirst and hunger, and endure blame and fame.
be level-headed, be serene, don't get flustered. हम विचलित न हो ऐसी अवस्था में. तप, स्वाध्याय, study of the scriptures, and Ishwar Pranidhan, surrender to God. These are the foundations that make us ethical in life and will lead us to grow on the spiritual path of life. Now look at these things. Does it have anything to do with the way we pray or however we pray, whenever we pray? And Yog Darshan uses one word for यम नियम का पालन करने में, महाव्रतम. जीवन में अगर व्रत को पालन करना है तो ये यम और नियम का पालन करो, फिर आध्यात्मिक मार्ग पे हम उन्नत होने के लिए स्वयं अपने काम करेंगे. That is very important because that defines the foundations of ethical living, और इसके आधार पे हम सभी दूसरे प्राणियों से आत्मवत व्यवहार करेंगे. We look at other living beings as siblings in soul, आत्मीय बंधु. That is the importance of that. क्योंकि एक तो जब हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, अंतिम लक्ष्य क्या है? जो कुछ जीवन में हो, हम विचलित नहीं होंगे. चाहे मान अपमान हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, उन सब अवस्था में हम अपने बुद्धि की साम्य अवस्था को बनाए रखेंगे. Will keep our serenity and not lose control of ourselves. That is the main importance of spirituality in our life. So I used to break the word into two: spiritual plus reality. That is to be lived in daily life. And that's why I say it's much more than religion, than going to mandir. आजकल लोग क्या कहते हैं, मंदिर में चले गए, कुछ भी कर लिए, 2 मिनट गए या 2 घंटे के लिए भी गए, but when you come back, you start again on where you were before you went to mandir. So is there real tangible progress in life? I don't say you shouldn't go to mandir, but when you go to mandir and come back, you should come back with the pledge that you are a better person than what you were when you were stepping into the mandir. और इसके लिए साधन क्या है? यम और नियम का पालन कर. And that will enable us to live spirituality as spiritual reality in daily life. That is 24 hours by 7, 24 by 7, 24 hours, 7 day week. तो अध्यात्म शब्द जो है, जिससे हम स्वयं इसके जिम्मेवारी को उठाना है. And if you look at when we transgress the principles of yam niyam, this is where
सामान्य व्यक्ति के जीवन में दुख शुरू होता है। I'll just take one example. अहिंसा किसी ने कुछ कह दिया and I feel कि इसके मुंह लगना नहीं चाहिए, I keep my inner peace. अगर इसको समझाना चाहिए तो मुझे यहाँ पर भी ये देखना चाहिए ये समझने की अवस्था है या नहीं, अभी बात टाल दूं, बाद में जब ये शांत हो जाएगा तब इसको समझाऊं। यथा योग्य और वो भी प्रीति पूर्वक। बट अगर जान को बचाना है, प्राण को बचाना है, एंड इफ यू हैव टू रिकोर्स टू वायलेंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, वो करना है। धर्मो रक्षति रक्षिता। Don't think that if you sit down in prayer and somebody is attacking your life and you just sit down, God will protect you. इतिहास में भरा हुआ है ऐसे पन्नों का। वन मंदिर itself, गुजरात में है, द्वारका, 16 बार आक्रमण हुआ, and most of the time it was reduced to ruins. सोमनाथ। हाँ, सोमनाथ. And people were, what they were doing? They were praying to God, ईश्वर हमें बचाए. And so many of these big magnificent temples have been destroyed. अभी भी अगर हम उस बात को समझे नहीं, that only going to the temples doesn't serve much in life. We need to abide by yama and niyama. Strengthen our spiritual self in that also will be benefiting on the physical side. क्यों? क्योंकि सत्य के आधार पे जिएंगे। जो भी हम अन्न खरीदेंगे, सत्य के मार्ग पर चल करके हमने कमाए उस सत्य धन को, सात्विक धन से हम सुख को भोगेंगे या अपने भूख और प्यास की तृप्ति हम करेंगे। ये नहीं कि किसी ने मुझे पकड़ लिया या किसी ने देख लिया कहेगा ये तो ये करता है, फिर इनके यहाँ ये कितने कैसे इतने संपन्न हो गए। You'll be in a constant state of fear where you've lost your mental peace, and that is going to impact on your life. वैसे ही चोरी नहीं करना। चोरी का माल जो है, you can feel happy for some time, but you live with ever fear. दूसरे ने अगर मुझे देख लिया, पुलिस को बता दिया, मन की शांति गई। Brahmacharya, for those who commit adultery, I just take one general example. They live of the fear कि स्पाउस ने कहीं जान लिया तो मेरा जीवन का सत्यानाश हो जाए। अपरिग्रह, ज्यादा से जरूरत अपने यहाँ रखने से क्या होता है? In spite of all the security systems, camera and alarm and etc., हमेशा भय रहता है किसी ने इसको हैक करके इसको डिसेबल कर लिया और सब कुछ लूट करके चला। और अपरिग्रह का पालन करने से काफी दोष से हम बचते हैं। वन, संग्रह करने के लिए जितना समय चाहिए, जितना चाहिए जीवन के लिए, सुखपूर्वक जीने के लिए हमने प्राप्त कर लिए, उसके पीछे जाएंगे, then we are stressing ourselves, we'll be wasting our time and energy. और फिर हमारे पास आने के बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए अपने ऊर्जा को, you have to apply yourself physically, mentally, just to make this safe.
to guard that. फिर उसके बाद उसकी वृद्धि करने के लिए, क्योंकि जो जिसके पास जरूरत से ज्यादा है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं होता है. He or she will strive to get more and more, and then वहां पे क्या होता है? वृद्धि, अर्जन, पहला अर्जन प्राप्त करने का, दूसरा रक्षण, तीसरा वृद्धि, एंड देन क्षय दोष. कुछ भी नहीं, whatever be the palace that you can build with the resources that you've had, you will find somewhere कहीं पे कुछ गड़बड़ है. You need maintenance, you need so many things, and the more vast it is, the more you have trouble of maintenance of these things. तो क्षय दोष. और ये है कि व्यक्ति जो है उम्र के आने के बाद रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट कि ये बॉडी जो है, शरीर जो है, इसकी भी क्षय ह्रास होने लगती है. दैट इज ए नेचुरल प्रोसेस. And when people refuse to accept that, this is where they all go for what we say, cosmetic plastic surgery. They go for Botox. They go for all these things, and long-term consequences. आप गोलियां लेकर के चलो जीवन. अपरिग्रह, that is important. Then Soch, purity. Purity is not only by having bath every day. Purity of mind, body, and spirit. And remember, spirit, Atma, is the third level. The first is mind. Why? विचार से सब कुछ आगे जनरेट होता है. विचार से वाणी, वाणी से कर्म, शारीरिक कर्म, मनसा वाचा कर्म. That goes in the same order. The words are in English: man, vani, mind, body, and spirit. So manasa vacha karmana. That is the trend of it. Otherwise, Soch, ahar, vichar, vyavahar. Ahar will look at your body. Vichar will look at your mental state. Vyavahar will give you social peace. Whether it's among your core family within your house, relatives, friend circle, and society at large. Then Santosh, a very important part. Instead of being happy of what we have, we are generally unhappy for what we don't have. This is the common trend in life. अरे भाई, जो अपने पास है उससे कम से कम संतुष्ट रहो. जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम जब संतुष्ट रहते तो दिमाग क्लियर होता है, फिर आगे सोच सकते हैं ये मुझे जरूरी है, मुझे अब इसको कैसे धर्म के मार्ग पर चल करके उसको प्राप्त करना. जब संतुष्ट रहते हो, the mind has more clarity, and then you can work better. Tapa, I said, enduring some of the heat and cold, that develops physical resistance. भूख प्यास थोड़ा सा आप सहन कर लो, that enables you to be compassionate towards others. कोई भूखा या प्यासा मिल गया तो आपके पास जो टिफिन है या लंच है या पानी है उसको दे सकते हो, because you've trained yourself for that. मैंने सुबह भोजन किया था, ब्रेकफास्ट किया था, शाम को तो डिनर में कर ही लूंगा. पानी की चाहिए तो आगे शॉप मिल जाएगा, मैं खरीद लूंगा. So it enables you to be compassionate. करुणा की भावना जो है वो जागृत होता है. And we become a better person in our interactions with other human beings, with other life forms. स्वाध्याय, स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स. ये सिर्फ कथा सुनने से कोई खास काम नहीं होता है. क्यों?
It goes from one ear and out of the other like a windpipe. Most of that, I don't say. कई व्यक्ति के retention power ज्यादा होते हैं, but generally we've seen probably people remember only 20% of what they've heard. खासकर सत्संग में जाते हैं ना, वो वक्ता के जो फ्लो में है उसमें हम घुल मिल जाते हैं, खासकर जो चिकनी बातें होते हैं। ज्ञान की बात अगर 2 लाइन में आए तो वो मिस कर ली। इसलिए स्वाध्याय स्वयं से समय निकाल करके स्वयं से अध्ययन करना। Then ईश्वर प्रणिधान, which I always say when we do संध्या, जब हम वहां पे आते हैं, मनसा परिक्रमा, प्राची दिग्नि से ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति। ये जानो कि ईश्वर हर समय हर पल, irrespective of place, time and circumstances, ईश्वर मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। If we integrate those concepts in our life, then we can say we are walking on the spiritual path of life, जिसे योग दर्शन कहता है एक शब्द में महाव्रतम। And if I bring it from another angle, हम शांति पाठ में क्या बोलते हैं? द्यो शांति, द्यो luminous bodies, अंतरिक्ष शांति, the space, पृथ्वी शांति, the earth, apa shanti, the waters, etc., etc. You see, we have, और उसमें क्या है? ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति रेव, शांति रेधि, आदि. It's both the living and non-living beings. And spirituality is not about being on the right path of life only with living beings. It's also with non-living beings to get that peace, that inner peace. अब मेरे घर के अंदर जो कूड़ा है मैंने उठा करके रास्ते में फेंक दिया, और कूड़ा उठाने वाले 3 महीने नहीं आए, तो जिस घर में रहता हूं उसके अंदर, बाहर से अंदर जाना और अंदर से बाहर निकलना मुश्किल। So that's why we need the spiritual aspect of life. Is not only, it starts with the interactions with our own self and spread to our interactions with both living and non-living beings. And if somebody will say, how come? वो जो यम नियम में जो 10 है तो non-living beings कहाँ से आ गया? Inner things. जब हम अपरिग्रह को बोलते हैं ना, so we'll stop exploiting over-exploiting the natural resources of the planet. वैसे परिग्रह, by accumulating more than enough, we're exploiting more than what is needed for human life. ईश्वर ने जो संसार बना करके दिया हमें, we have enough for everybody's needs, but not enough for the greed of a few. And to be safe on the spiritual side, 3 चीज से बचना चाहिए. पुत्रेष्णा, लोकेशना and वित्तेष्णा. पुत्रेष्णा, lineage. हम जो कुछ करें सिर्फ अपने बच्चों के लिए या अपनी शिष्यों के लिए करें. That is being selfish. जो सेल्फनेसनेस आप लोगों ने बात की है ना, we are lost on that path of निष्काम कर्म, selflessness. ये नहीं कि अपने बच्चों को बिल्कुल निग्लेक्ट करना है, नहीं. We have our duties and responsibilities.
बट अगर दूसरे के बच्चे भी आ गए बीच में, वी शुड डिस्क्रिमिनेट. दूसरे के बच्चे हमारे बच्चे से भी ज्यादा होशियार हों, that they are more, as we say, probably they've got better results at the exams, so they have a better work. इसका ये मतलब नहीं कि उनकी निंदा करें. Learn from these people. But Lokeshna, if we are in, if Putreshna, if we are only centered on our kids and forget about that, we'll fail to learn from others the good things of life. और धृतराष्ट्र का वहीं पे मारा गया, पुत्रेशना. Then Lokeshna, don't chase name and fame. आपके कर्म जो है वो स्वयं आपको प्रतिष्ठित करेगा. I often take that mantra, hrit pratishtham yadajiram javishtham, from the personal point of view. ये आध्यात्मिक अर्थ में नहीं निकाल रहा हूं. The spiritual meaning of that mantra, I'm bringing it to the lower level of understanding. मंत्र पहले ने क्या किए, यज्जाग्रतो दोरामुदयति दैवम, एंड देन अंतिम में कह रहा है सुसारथी रश्वा. सो हम अपने जीवन के सुसारथी बने. तो इन सब करने से हम स्वयं प्रतिष्ठित होंगे. We don't need others to beat the drums for us. जैसे one thing which मेरे पिताजी हमेशा हमें बताते थे, अंधेरी रात में आपको टॉर्च लाइट चाहिए चलने के लिए रास्ते में, लेकिन पूर्णिमा के दिन में अगर आप टॉर्च लेकर के चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कि तो बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं. क्यों? पूर्णिमा स्वयं अपने आप को प्रतिष्ठित करता है. चंद्रमा जो है पूर्णिमा के माध्यम से. Just be like that. Shine bright with that spirituality in life. और फिर वित्तेषण, धन के पीछे मत भागो, क्योंकि जीवन जब समाप्त हो जाएगा तो ये सब यहीं पे रहेगा. यू नीड, ये नहीं कि यू नीड टू लिव लाइक ए beggar, नो. यू नीड टू enough to live a decent life, but don't chase beyond what is needed. अब देखो, I take one example. जो सबसे नीचे लेवल के लाडर पे हम, you pay value added tax etc. as everybody else. Even the rich and the poor will pay the same rate. But sadly, in the form of direct taxation, the corporate bodies or the people who have much, they know the tricks of the trade, they escape the net of the laws, and they pay the least of taxes. And when they are hoarding that wealth with them, that's why others are poor and they are rich. ये जो अंतर है ना गरीब और अमीर, ये फासला जो है बढ़ता जा रहा है, because people, they say we are spiritual, we are ethical in life, but fundamentals में जाओ, we are very far from that. So if you take the gist of it, probably you've understood अध्यात्म या spirituality की क्या जरूरत है हमारे जीवन में. It was a good start by you giving some of the inputs, and then I had to elaborate on that. Any questions? We can take fast on that. Otherwise, we can go to, I'll give you the question for the next week, and then we can move to Sunday. Anything which you want to add, just unmute yourself, switch on your camera, and then you can say please. अति सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, पर
मैं तो grade 1 student हूँ इसके अंदर. Others are way ahead of me. I recently started taking interest in all these things. So I found the spirituality subject as very, very fascinating. And it's a very vast topic. ये आधे घंटे या 45 मिनट में समझने वाली बात नहीं है. अगर if it is possible for you, if you can elaborate on this thing as a topic, as a session for a month or something, like 4 sessions or something, to go in detail. रिलीजन पे तो बहुत बात करते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर सेपरेटली अगर आप करें तो वो बहुत अच्छा और बहुत हेल्पफुल होगा. दिस अ स्मॉल सजेशन फ्रॉम मी. Yeah, this is what I'm planning. अगर आप नोट करेंगे, the topic for next week would be, अभी श्रावण मास चल रहा है ना. श्रावण मास, what is the importance of Shravan Mass to grow on the spiritual path of life? ओह, ये तो समझ से बाहर. पहले तो श्रावण मास को समझना पड़ेगा, फिर Then you should know what is Shravan, Shravani, and then you will find the answers. श्रावण मास तो बरसात के दिन होते हैं, मॉनसून इंडिया में है, तो उसको. लेकिन शब्द जो है श्रावण क्यों है और श्रावण किस शब्द पे निकला हुआ है, if you understand that, you can grow on that question. Shravan, Shravani, how does that help to grow on the spiritual path of life? इंडिया में, राजस्थान में श्रावण मास में वो यात्रा करते हैं, पैदल जाते हैं हरिद्वार तक, और वहां से फिर वो गंगा जल लेके आते हैं, और फिर वो अपनी अपनी that is ritual. That is ritual. Yeah. That is not ritual. spiritual. That is religion. So religion That is ritual. That is not spiritual. Yeah. Spiritual has words more than ritual. Are there any books on this? Are there any I give books you on one clue. Shravan is from Shravan, सुनना. और सुनना क्योंकि बरसात के दिनों थे, उस समय हमारे ऋषि मुनियों के जमाने में वो लोग अपने कुटिया से निकल करके गांव और शहर में आते थे, लोगों के बीच में रहते थे, लोगों के पास, इट वाज मोर एग्रीकल्चरल कम्युनिटी. तो बरसात के दिनों में लोग तो बाहर नहीं जाएंगे काम करने के लिए, तो लोग बैठते थे, वेदों का पठन पाठन, वेद का सुनना सुनाना और कथा के माध्यम से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना. So I given you the clue and now you need to grow on that. स्पिरिचुअलिटी पे कोई बुक्स हैं? स्पिरिचुअलिटी पे अगर उसको समझना है तो उपनिषद कम से कम पढ़ने के लिए शुरू करें. उपनिषद सरल भाषा में भी है, और उपनिषद जो है ऑनलाइन भी मिलता है. एकादश उपनिषद आई थिंक बाय सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार डाउनलोडेबल है, और वो सरल भाषा में है. या एक दो उपनिषद जो है छोटे छोटे, वो महात्मा नारायण स्वामी के भी है, छोटे छोटे पुस्तिकाओं के रूप में. दिस आल्सो यू कैन गेट प्रॉब्ली ऑन डाउनलोडेबल फॉर्मेट, वहां से पढ़ लेंगे. अदरवाइज you can order online and then buy it, but buy the authentic versions. जैसे महात्मा नारायण स्वामी ने किया है, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने किया है, ये सब. अब जैसे एक ये है, ये उपनिषद प्रकाश है, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार. हालांकि उसने एकादश उपनिषद पूरा किया है, उसमें पूरा 11 उपनिषद नहीं है, बट ही इज गिवन ए गुड ब्रीफ एंड उसकी भाषा भी सरल है. He's given a brief of it. That is also a very good book, Upanishad Prakash. And that also, I think if you look for it, you can download from internet. Okay, I'll try that. Otherwise, I'll get back to you. Yeah. So just remember the question for next week. Yeah. Shravan with specialty. Shravan, Shravani,
and spiritual growth. Shravan is separate and Shravani is separate. श्रावणी, ये जो हम अभी 2 महीने के लिए मनाएंगे ना, श्रावण मास, उसके अंतर्गत हम उत्सव की तरह मानते हैं, आध्यात्मिक उत्सव, and that is the name given to it, श्रावणी, श्रावण मास के अंतर्गत. Okay. आचार्य जी, अगर इनको कोई बुक चाहिए हो तो आर्य समाज की लाइब्रेरी में भी काफी बुक्स हैं. अगर इनको कोई, अनिल जी, अगर आप वहां जाके देखें तो आपको बुक्स मिल जाएंगी. उपनिषद भी रखे हुए हैं आर्य समाज मार्कम के. हाँ जी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी डायरेक्टरशिप के लिए, और प्रॉब्ली मैं किसी दिन आपको जरूर मिलूंगा. बहुत नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है. और बुक्स अगर चाहिए तो आप लाइब्रेरी में वहां बैठ के पढ़ भी सकते हैं. हाँ जी, जरूर देखिएगा. ओके, थैंक यू. मैंने चार्ट में डाल दिया, श्रावण, श्रावणी, ग्रोइंग ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. फिर उसके बाद सिंपल सा सब्जेक्ट लूंगा तीसरे सप्ताह का, द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बिहाइंड आरती भजन, जो हम हमेशा गाते. I'm going to take simple things and delve into it. या So अगले सप्ताह के लिए यह है श्रावण, श्रावणी, अध्यात्म मार्ग पे उन्नति करना, growing on the spiritual path of life. नहीं, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है. आई थिंक जितना आप हमें इस बारे में बता सकें, it will improve our quality of life and the way we live. Rather than religion, I think this is a much better way. Yeah. चलो हम समय तक होगा गया.